या बस एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हम लाइव हो चुके हैं वैसे। या वी आर लाइव। So, welcome to the session, Karishma, and congratulations for clearing the XLRI. जमशेदपुर हुआ ना आपका फाइनल कन्वर्ट? हाँ, yes sir. ठीक है। So, congratulations here. So, let's start the session, guys. Guys, first of all, आप लोग भी सेशन को शेयर कर देना, एंड आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो आप लोग पूछ सकते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स पहले हम लोग करिश्मा से पूछ लेते हैं, करिश्मा ने कैसे अपना प्रिपरेशन किया था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ने इसको परेशान किया है, कौन कौन से इसका फोर्टे था, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। तो करिश्मा मेरे को मतलब बताओ, आपका क्लास 10th में कितना सीजीपीए या परसेंटेज था क्लास 10th में? 92% 92। class. एंड इन 12th 90. एंड ग्रेजुएशन? Graduation में 8.1. 8.1। फिर ग्रेजुएशन में कौन से ईयर में प्लान कर लिया था कि मेरे को यार एमबीए करना है, कैट क्रैक करना है? Around third year. थर्ड ईयर में And मतलब? around fourth year I started preparation. ओके ओके। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने, बीटेक किया? हाँ, BTech. कौन से स्ट्रीम से? Production engineering. Production. कौन से कॉलेज से? और Government Engineering College, Thrissur in Kerala. ओके ओके, ठीक है। मतलब स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता होगा आई थिंक ये तो। हाँ, yeah. ठीक है। तो थर्ड ईयर में मतलब फोर्थ ईयर में प्लान कर लिया था? Yeah. Fourth year I started preparation. ओके। सो कितना बना आपका कैट में, कितना बना, क्योंकि टारगेट तो हम लोग कैट ही करते हैं। कैट में CAT कितना? around 95. 95 बना कैट में, मतलब एक्सपेक्टेड कितना था? और Around 98. 98 के Expected अराउंड 98, एक्सपेक्टेड था। 98. क्योंकि ओके। मॉक्स में like that was the marks that I was getting. मॉक्स में इतना आ रहा था 95? ओके हाँ. ओके। एंड फिर मतलब कैट अच्छा नहीं हुआ ये पता लग गया था उसी दिन, मतलब कि यार ये तो Yeah, the same day, yeah. The same day I understood that it hadn't gone well. ओके। So I started preparing for that. जैट आईएफटी नहीं दिया था? आईएफटी? No, only that and that. ओके ओके। फिर मतलब कैट के बाद दूसरा बैकअप था हमारे पास जैट का। तो मतलब कैट हाँ. के बाद हमारे पास जैट के लिए अराउंड 40 डेज का टाइम पीरियड होता है बीच में। Yeah. और कैट का रिजल्ट भी इस बार जेड से पहले आ गया था। इस बार तो हमारा दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, मतलब दिसंबर 23rd। Mid-December. हाँ। Hmm. तो फिर बेसिकली हम लोग दोनों की चीजें करेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन तो हमारा कॉमन है जैट और कैट में, ठीक है। अराउंड Hmm. 60% सिलेबस में कॉमन मान के चलता हूँ। देर आर टू सेक्शंस जो कैट जैट को अलग कर देते हैं कैट से, डिसीजन मेकिंग एंड जीके वाला सेक्शन, ठीक है। उसमें थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत कम आता है, मतलब जैसे कैट में सेट्स वगैरह आते हैं तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग तो मतलब तुम्हें बहुत कम दिखाई दिया होगा हाँ sir. जैट में ना। There was just one data set question in DM. हाँ, क्वांट DM के नहीं आते हैं, था. 28 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के, है ना। Hmm. और Yeah. डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चंस होते हैं, जहां तक मैं Hmm. नंबर्स गेस कर पा रहा हूँ, सही यही है ना। Yeah. और Yeah. Yes sir. वर्बल वर्बल का कितना क्वेश्चंस होता है? 24? 26. 26 हाँ, क्वेश्चंस, 24, 26. हाँ. इतना ही होता है ना। ठीक है। तो कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, कौन से मंथ में? क्योंकि वर्क एक्स तो आपका कुछ था नहीं, और आप लास्ट ईयर ही पास आउट Yeah. हुए हो, है ना। Last year 2022 June, May June. मई जून तक आप Then I कॉलेज, got हाँ। आई yeah. थिंक। Then I started working. Even ओके while preparation, I was working, and ओके I was working in my family business. ओके ओके, फैमिली So बिजनेस। family, हाँ, so एंड in renewable energy sector. ओके। सो मतलब फुल फुल फ्लैश प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया कि यार अब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं? अनअकैडमी का सपना कहाँ से आया कि यार अनअकैडमी से मेरे को प्लान ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है, कि मतलब ये? So this was during the first attempt that I joined Unacademy. First ओके। attempt around September of no 2021 March. Full fledged 2021 preparation I मार्च? started. हाँ. ओके। देन मतलब कितना सब्सक्रिप्शन, तो आई 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लिया था क्या आपने? First 1 year, then again top up next one more year. ओके ओके। तो कैट 2021 भी दिया था? हाँ, दिया था. That didn't कि, go as expected. कि, So and then I gave that cut off. I cleared the cutoffs. I got the interview and then I couldn't convert.
बट इस साल जैट हो गया कन्वर्ट। हाँ सैड हो गया। मतलब बैकअप में सिर्फ जैट ही था या कोई और एग्जाम भी था? नो ओनली दैट। ओनली जैट, कैट एंड जेट बिकॉज आर द माई ओन। वाज ब्लैकी और एक्सएलआर। ब्लैक और एक्सएलआरआई। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन, मतलब कौन सा तुम्हारा फोर्टे कौन सा था, मतलब सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था इन तीनों में? From the beginning, it was verbal was easier. ओके। VARC was consistently easier. LR was okay. Quant was my toughest तो section. क्वांट में कैसे स्ट्रगल किया, मेरे को बताओ कि क्या चीजें, मतलब स्टार्टिंग में क्या फेस कर किया तुमने और कैसे उसको, मतलब फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई हैं चीजें? So, the problems that I had was in quant, there are a lot of shortcuts for each question. So I'd be like, okay, I learn the shortcut, and then my concept would be weak. ओके। So this time, like that's what I corrected. I went behind the concept, tried to learn what the concept is rather than going behind the shortcut. Or during mock analysis, I had a notebook where after each mock, after when I was doing the analysis, I write down the question, solve the answer. So I had a notebook with just mock questions, with both questions and answers. So towards the end of the preparation, I had a lot of good questions with me on hand. Or ओके। I had a problem of forgetting equations. So I had made flashcards and with the important equations, arithmetic, geometry, mensuration, algebra, and then every day just go through all the equations at least once. तो क्वांट का And सिलेबस, पहले सिलेबस कंप्लीट किया अनअकैडमी से पूरा? yeah, कौन कौन से क्लासेस with किस किस से you. कवर किया है वो भी आप बताओ पूरा। Mostly quant, I did it from USA. Like I ओके took ओके। all the tips that you gave. And ठीक। then maybe in between, I would attend Ravi sir's classes in the ओके morning, like before college in the morning, he had like a 7 o'clock class. ओके That these two. Or Arun Sharma sir's quant book. I must have solved most of the questions from his book. ओके ओके। सो मतलब पूरा बुक सॉल्व किया है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, ऑल Huh. टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर। Yeah. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मतलब होता है ना, कॉन्सेप्ट इज द की टू, इफ यू वांट टू Hmm. क्रैक कैट एंड जेड, तो मेरा मानना है ऐसे कि कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मतलब एक होता है ना, रिवीजन को कैसे किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अर्थमेटिक कवर कर लिया, अब हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं, तो मैं अर्थमेटिक का रिवीजन कैसे, मतलब कैसे रिवीजन कैसे करते थे क्वांट में आप? So that was also an issue that I had, that you had said in one of your classes. So in the beginning, I was like, I want more material. I don't have enough material. I was trying to get material from everywhere. And then you had said, whatever material you have, first solve it and then go on. So I did all the practice sheets. I had time and I had mock and Arun Sharma solved all of that. I think by August, September, I must have solved all the material. There were a few questions that I found, topics that were that I found a bit tricky. Went back to that. Few questions that were tough. Went back to that. And then again, the basics. Just kept ओके। covering the basics again. एंड लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रैटेजी? Logical reasoning again. Arun Sharma sir's books and कॉन्सेप्ट वीडियोस? basically concept videos. Huh? So then I knew, like in logical reasoning, uh, it was mostly just keep practicing sets, because after I started practicing, things just come to you naturally. Like in the beginning, I would take 30 minutes to solve a set. Towards the end, it was 10, 12 minutes I could solve it. And ओके one thing that for me that worked was I had my own coding for long sets. So if it's like A is not next to B, it would be A exclamation mark B, ओके, वो or A तुमने is अपना immediately left कोडिंग है? of B. Huh. So A is left immediately left, so it be A in brackets B. If A is ओके। left to left, just A arrow B. So I think like that helped me a lot because I had my own way. I didn't, so I remembered what the रीडिंग information was. I रीडिंग didn't टाइम, keep रीडिंग टाइम going सेव back. हो जाता है बहुत ज्यादा, बार Huh. बार रीडिंग नहीं करना पड़ेगा। Yeah. ओके And that was mostly, yeah. And then picking out the easy sets, ओके which ओके was a big issue in the beginning. So then with practice that came up, that I could identify once I read it, yeah, I can do this. And I would target the DI sets first and then go on to LR. Because ओके DR is like, okay, if I attempt it, if I can understand the data, I'll be able to solve the uh, questions. ओके। एंड
what about VRC strategy? So VRC, reading comprehension was okay because I had a reading habit. So reading speed was okay. But the problems came in when in a question, two options would be very close. So then from Shavana ma'am, I learned like the process of elimination, how to narrow down, how to go back and find the right answer. And reading comprehension, I had like there were several topics. So philosophy, psychology. I would go back to philosophy. I didn't understand philosophy at all. So I'd go back to YouTube and then learn the basics of philosophy. So okay, there are a lot of videos on what is philosophy, what is the basics of philosophy. Learn that and then go back and read those. Read the article again. Okay, So towards the end, if any article is there on philosophy, I was comfortable with it. I could read it and understand it. Or then grammar and all I did from Karishma Menon. okay, okay. Grammar, PJs, para completion. From Karishma M sessions. Okay, and मतलब कब सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? अगस्त सितंबर? जैसे हाँ आपने अगस्त मार्च सितंबर 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, या तो so then 2020, हाँ, March 2021 I started. I must have again finished around September something, and then I'd started taking mocks from July. ओके, Then I attempted CAT 2021. It didn't work out. So then I started preparing for that again. I cleared that, but interview I didn't go through with the. I couldn't convert it. So then I took a bit of a break at the end of fourth year, few months break, and then again started in June, around June, and I started working in July. ओके, ओके, So from फाइन. July onwards, I was working. तो जुलाई, आफ्टर जुलाई onwards you are completely focused on mock test and sectional test. Huh. Yeah. Okay, so मतलब what was your mock test strategy? मतलब which part you have taken first and then मतलब कौन सा क्या क्या रहता था? जैसे क्वांट में कौन से टॉपिक्स तुम्हारे बहुत अच्छे थे, लगे अर्थमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, कैसे उनको So तुमने? quant में my best topics are all arithmetic topics. Okay, Geometry is okay. Algebra, sometimes I used to struggle with algebra. have you skipped any topic Arithmetic in was my quant? strong point. A bit of modern maths. Towards the end, probability, permutation, and combination. Towards the end, few topics I skipped in Okay, modern okay, maths. बाकी all you have completed in number हाँ system. Okay, हाँ numbers yeah. so basically you have skipped मतलब permutation modern maths वाला part जो था हमारा, Hmm. है ना? एंड हाँ अर्थमेटिक इज योर मतलब फोर्टे, मतलब कि अर्थमेटिक की कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो ठीक है, अच्छा yeah लगेगा. I'll be able to solve. हाँ एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन, I was okay with geometry and mensuration. बट अलजेब्रा इज अगेन योर Most प्रॉब्लम. algebra was a problem. एंड लॉजिकल रीजनिंग में इज देयर एनी टॉपिक, जैसे बच्चों का होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट समझ में नहीं आया ये, मतलब इज देयर एनी टॉपिक हाँ जिसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था? yeah, games and tournament was an issue for me. Like seating arrangement and all was fine. सीटिंग Games and अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग, tournament was a सीक्वेंसिंग. uh, that one was perfect. If a problem came, most probably I would be able to solve it. Games and tournament had slight issues, so I would keep going back to it and keep ओके, ओके, saying like YouTube videos, your YouTube videos. There are several other videos also on games and tournament. ओके, ओके, Then I'd watched I think Unacademy at that marathon series right before CAT, so I'd done या that also. And mock test, मतलब what is the role of analysis of mock test in your preparation? मतलब एक mock test का analysis होता है. There are two types of students. One is जिस mock test लगाया, ठीक है, बात खत्म, अब स्कोर आगे देख लिया. And the second one is mock test के बाद हम लोग उसका analysis भी कर रहे होते हैं कि mock test का Hmm. ये मेरी गलतियां हैं, ये मैंने अच्छा किया यहाँ पर, या मैंने एवरेज टाइम से ज्यादा लिया. तो एनालिसिस को कैसे किया, मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे आप? So for quant, like I'd already said, after the mock, I'd write down all the questions and the answers. ओके, So then I'd remember these answers for sure in the future. ओके, Then towards the end of the preparation, towards the end, what I do is I take these questions and then time myself and then see it if I can solve it within 2 3 minutes. ओके, Because ओके. I had a problem where I would take too much time in solving questions, so I had to make sure that I could solve it within the time limit under pressure. What was your highest score in quant in mock tests? Highest score must be around 40 something I'd reached.
And and percentile, total percentile? percentile must have been 99 in during my mocks, and then highest score that I must have got in mocks was around 120. But on 120. the day on CAD, while I gave the exam, things didn't go as planned. Okay, okay. एंड कैट कैट दी डे मतलब उसी दिन मतलब कैसा मतलब क्वांट में कौन से सेक्शन ने बहुत ज्यादा परेशान किया 27 नवंबर को कि यार प्रिपरेशन तो देखो सब लोग कैट का करते हैं ठीक है मतलब कैट हम्म टारगेट तो हमारा हम लोगों का कैट ही रहता है तो एक होता है ना कि यार एक अच्छा पेपर नहीं हुआ उसके बाद भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है कि नहीं यार मैं जैट को टारगेट करूंगी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हम्म होते हैं वो प्रिपरेशन कर सकते हैं जैट में बहुत अच्छा कर सकते थे बट उनका कैट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वो लोग वहीं पे पीछे हट जाते हैं कि एक हो जाता है ना बहुत परेशान हो आदमी परेशान हो गया कि यार ये नहीं हो पाएगा अब छोड़ देते हैं तो ये कैसे मतलब ये पता है कि मेरे को मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ फिर अगले दिन ही दोबारा से वो तैयारी दोबारा करना है कि नहीं मेरे को जैट टारगेट करना है मेरा टारगेट वही है छोड़ो जो हो गया हो गया ये कैसे डील किया मतलब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे को ऐसा लगता है हम्म कुछ कुछ लोग इसमें 1 वीक अपना मतलब वेस्ट कर देते हैं कि नहीं कैट में हो जाएगा अच्छा होगा या इतना होगा इतने पे मिल जाएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता है कि हाँ नहीं अच्छा हुआ अब मेरे को सीधा जेड टारगेट करना है तो ये कैसे डील किया था तुमने क्योंकि तुम्हारा कैट में 95 आया था कैट के हम्म थ्रू कोई कॉल्स वॉल्स आए हैं तुम्हें हाँ सर, कैप कॉल नागपुर विशाखापट्टनम। ओके ओके तो वो कैसे डील किया आपने वो मेरे को बताओ कैट के एग्जाम के बाद सीधा जेड को टारगेट करना Yeah, so on I had slot one for CAT. So by afternoon itself I knew CAT ओके hasn't gone how I expected it. So 2 days I spent in being sad and being depressed and getting over the thing, getting over it that CAT didn't go well. So now I had to do something because I wanted to. This was do or die for me this year. 2022, I have to get in. I put a lot of pressure on myself. You have to get in. You have to do something. So after 2 days, even my family was very supportive. So they're like, it's ओके okay, it's fine. You didn't do well for CAT. ठीक है, we'll prepare for that. There's XLR as the last time. You cleared the cutoff. You didn't convert. ठीक है, it's no problem. बट So I think लास्ट my टाइम से family was मोटिवेशन मिला very होगा कि supportive. लास्ट टाइम यार मतलब हाँ, मेरा मतलब इट्स सब इंटरव्यू वगैरह सब हो गया था बस फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ था तो एक मोटिवेशन रहता है कि जैट हो जाएगा इस बार तो हो जाएगा yeah, so हाँ that was there. Like I cleared the cutoff, I clear the cutoff this time. So now I have to prepare for the interview. I had it in mind that this time I'll pass I'll have to pass the interview. So I got confidence from that ओके from last year. अभी देयर इज अ वन कमेंट वेयर डिड यू लैक ऑन द डे सत्यम इज आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन हाँ. वेयर डिड यू लैक ऑन द डे So BRC was fine. I did well in BRC. I went to DILR. ओके So DILR sudden there was pattern change, and then I got nervous around that time. I think DILR mein I got nervous that I wasn't getting the sets that I usually do. Usually I get 2 to 3 sets done. So this time I couldn't do that. So then that pressure then went on to my quant section. सॉरी यार एक्चुअल में हाँ ठीक है हाँ सर. तो सत्यम आई थिंक यू गॉट योर आंसर सत्यम इज आस्किंग आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग डीएलआर में दो सेट्स नहीं बने थे आपके मैंने नहीं सुना मतलब आपने क्या Usually I do 2 to 3 sets, but this time I got like 1.5 sets. Second set, I got like 2, 3 questions and one full set. एंड डीएलआर अगर अच्छा नहीं होता तो फिर उससे थोड़ा क्वांट पे भी फर्क पड़ जाता है कि यार Huh, डीएलआर so भी then that impacted my quant at the end of the day. ओके अगेन सत्यम इज आस्किंग एनी टिप्स इफ यू लूज योर 20 मिनट्स इन डीएलआर तो 20 मिनट्स अगर आपके हो गए उसके बाद क्या करना है डीएलआर If you lose your 20 minutes, I think it's best thing is just stop what you're doing, take a deep breath for maybe 15 seconds, and then go back. At that point, that's the only thing you can do. Just stop for 15 to 30 seconds, relax, take a deep breath. You एंड have देन done अगेन all the work for the past 1 year, so then that has to pay off in a certain manner. If you have done the work, it will pay off. ओके एंड क्वांट में हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वर अटेम्प्ट इन कैट 2022 Must have attempted around 15. 15 क्वेश्चंस एंड योर एक्यूरेसी लेवल I think I got around 12 questions right.
12 क्वेश्चंस करेक्ट, तो आई थिंक क्वांट में तो आराम से No, 98 wait, समथिंग। I think no, sir. That's I attempted. No, I attempted 12, and I must have got around 8 because 8 that क्वेश्चंस। in fact was there 8, 7, yeah, 8 question. LRDI section also affect your quant section. If it's not going well, then That was the definitely. biggest point because quant I was like confident this time. Quant may I'll do well. So then LRDI, I was very tensed about LRDI the few days before the CAT because the last mock I gave I didn't do well in LRDI. I did very well in VRC and quant. The last mock that I gave like a week back. So then Okay. that tension was there about LRDI so then when I went to write the exam, that tension I think contributed. Okay. So it's and can you please tell me your matlab D-Day strategy for that? So what you So have is especially that planned for that? मतलब अब fully now we will talk on only that, ठीक है? क्योंकि it's the uh, only exam जहाँ से main output निकला है. Finally you are converted XLRI जमशेदपुर. तो जैट के लिए क्या किया ऑन 40 डेज में, क्या किया आफ्टर कैट? अब कैट का जर्नी ओवर है, मेरे को पता लग गया। जैट के लिए क्या स्पेशली तुमने किया आफ्टर कैट? so that may the one big difference is decision making. So I had to focus on decision making. About one full week, I did only decision making. ओके। So all PYQs, all about 10 years PYQs of decision making, and then basics of decision making, like lot of points like ethics, what is business ethics, what kind of decisions should you take. And then the next thing about that I think that is different is that there's no clear split of time. You have to manage the time on your own. So I started giving mocks and decided how to manage it. So since I was most confident VRC, I did VRC first, then DM, last quants. So I ओके। had a target that once the clock, there's like about 90 minutes left. If there's just 90 minutes left, I'd go on to quants, leave whatever I'm doing and go to quants, finish it, and then come back and then come back to decision making, solve it, go back to quants. So on when I on D day when I during the exam I had more than enough time for quants. So ओके। I finished VRC, finished DM, and I think around 90 minutes was left for quant. Must have एंड taken हाउ मेनी about क्वेश्चंस यू हैव one अटेम्प्टेड? in quant. I must have attempted 18, 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस, 28 28. क्वेश्चंस, हाँ। एंड Huh. डीआई का सेट्स भी हमारे इसमें आते हैं, मतलब आई थिंक। Yeah, so this time there are only two DI sets, and that या also they were kind of weird. एक मतलब spider web बहुत type ट्रिकी था, one, मैंने ऐसे सुना है, हाँ, बहुत ट्रिकी सेट से। and हाँ। then the table. So as soon as I saw that, I was like, leave that. Let's solve the questions that you're sure you'll get. So first I solved the normal questions, where then went back to DI. So first I got confused a bit about it. So I was like, leave it, go back to DM and check some of the answers that I was doubt. I came back, then I got one full DI set right, or spiderweb graph question. ओके। Then in the table one, I had attempted two questions, one question from that, one question from the table ओके। question जो set. टेबल वाला डीआई सेट था, ओके। हाँ. एंड डिसीजन मेकिंग मतलब खुद से किया या किसी स्पेशल एजुकेटर को टारगेट किया, या मतलब कहीं से कॉन्सेप्ट वीडियोस The, देखे थे? yeah, Ravi sir's YouTube classes. यूट्यूब क्लासेस? रवि सर हाँ, कवर्ड pro यूट्यूब? था, yeah. ओके ओके। Hmm. Decision एंड making, yeah, lot of videos from past. अच्छा, ही इज कवर्ड डिसीजन मेकिंग ऑन यूट्यूब। हाँ, yes एंड sir. व्हाट अबाउट जीके पोर्शन? So GK, I have this habit of reading a newspaper every day in the morning. So that was almost covered. I didn't go too much into it. So I just covered like national reserve, like reserves, animal reserves, and all the ministers and chief justices we were just before. Current affairs, I was like, read the newspaper. तो इट्स That's ऑलरेडी, that was that's all that's required. And this year's GK was easier, I think, than that 2021. ओके That 2022, this year's GK had a lot of like FIFA related questions and all, which were very recent. ओके। तो योर टोटल अटेम्प्ट्स इन ज़ैट 2022? It's 64. 64। And out of 64, how many questions were correct?
And my total score was 44. Total score of 44. Okay. Okay. I think there is no logical reasoning question in that. Nice. No, Critical there's no reasoning questions logical. were there. Yeah, DMA critical reasoning, yeah, was Okay. there. Okay. So after ZAT का result कब आया था हम लोगों का? Around February, like first week or second week. It Okay. was उस late this time. and आपका इंटरव्यू कब हुआ है? Interview, BM's interview was March 21, HR March 23. March 23. आपका एचआर में हुआ है ना? हाँ, HR. ओके. सो इंटरव्यू वाले दिन का कुछ एक्सपीरियंस कुछ अलग हुआ? हाँ. हम्म. So my HR interview is very different from all the other interviews. Very relaxed. It's like a discussion. And the like the first question they asked me is like he gave me four qualities of a human and tell me what you find most interesting. ओके. So I picked. He gave me jealousy, crying, anger, and humility. So I picked humility, and then yeah, then we went into what is humility? Why does a leader need humility? Is it an important uh, qualities? Then we discussed about Sachin Tendulkar, being he is a man who's very humble, shows a lot of humility, etc. Then we took a totally different turn, went to Kerala politics. ओके. Kerala current affairs, then political situation in Kerala, currently what's happening in Kerala, then the COVID pandemic in Kerala, floods, and then he asked, did anything happen nearby? Did you how did you get affected by the flood? Then since I was working in a family business, then he's like, how did the pandemic and the floods affect you? योर Affect फैमिली the family बिजनेस. business? So then if you are working for like a startup or a family business, you need to know everything. You need to know everything about the business. So how did you get affected? You need to know the details about that too. ओके. Then it was just a discussion again and again on Kerala politics and current affairs. But in my BM interview was I felt went best XLRI BM interview, but then they got waitlisted for XLRI Delhi and rejected from XLRI Jamshedpur. ओके. ओके. There, it was totally about the family business. So then they asked me, what is the size of the business? What's your profit? Net profit and gross profit. What are your verticals in the business? Your price points, government policies, subsidies. Then how will you sell it to a customer? If a customer comes to you, he gave me like a case study. He said, if I am your customer, how will you sell this product to me? And then he kept probing on till I couldn't say, okay, what is the next reason? What is the next reason? So then that became kind of stressful in the BM just because they kept probing for more and more reasons. Then, since I was also involved a bit in marketing, so digital marketing, details about digital marketing, what did you do, SEO, website, social media, etc. ओके. ओके. एंड रिजल्ट कब आया हमारा? Uh, Result, XLRI released in on now it's mine came just 2 days before because it's waitlisted for HR. ओके. ओके. So May 4th. ओके. एंड मतलब बहुत देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं सर वी आर आल्सो टारगेटिंग जैट. सो मतलब कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सर हम अभी से स्टार्ट करें क्या डिसीजन मेकिंग को करना. सो व्हाट मतलब व्हाट यू सजेस्ट देम कि I don't. स्टार्टिंग से करें या मतलब हम कैट के बाद टारगेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग वाले पोर्शन को? I think if with whatever preparation you did for VARC critical reasoning for CAT, that helps you a lot in decision making. You just need around 2 weeks, 2 weeks of preparation for to understand decision making and get good scores. So you don't need to stress out a lot about that. If you did a very good CAT preparation for critical reasoning in VARC, that will help you in decision making definitely. You ओके. just need to get used to the kind of questions. So just do PYQs and you'll start seeing a pattern because they have some questions: education, health, business questions. These three are their main topics that they cover. ओके. एंड इज देयर एनी सब्जेक्टिव डिफरेंस इन कैट एंड जेट? मतलब कैट का प्रिपरेशन अगर कर लिया है
तो क्या जैट के लिए तो पता है डिसीजन मेकिंग और जीके वाला पार्ट अलग से करना है? मतलब इज देयर एनी Mm-hmm. डिफरेंस इन वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? Verbal ability, yeah, verbal ability because you have poetry questions. That's something you need to get used to. Because CAT में there's no poetry and poetry questions sometimes a bit tricky, and there might be even a pronunciation of words. They have more ओके, weightage for grammar. So you will have to focus on grammar, understanding poetry, then poetic devices. Sometimes they've asked what poetic devices are there. Basics like that in English you will have to do extra other than what the preparation you did in CAT. And for quant, what I felt was the questions were longer. They take a क्वेश्चंस bit लॉन्गर। more of time than um, CAT. So you need to लैंग्वेज थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चंस का। देयर आर आल्सो सम reading क्वेश्चंस जो time is हाँ, also more. मतलब अपने को So you पता है just कि need to get used to. एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगना है, बट वो 5 लाइन का क्वेश्चन बना Hmm. देगा, कॉन्सेप्ट वही छोटा सा इजी Yeah, रहेगा उसमें। सो हैव यू कवर्ड but ज़ैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? बिकॉज आई हैव आल्सो yeah, कवर्ड ज़ैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन माय yeah, यूट्यूब। yeah, I used to watch your YouTube videos. That from there I covered all the PYQs for CAT and ZAT. या आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, मतलब ज़ैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैट प्रीवियस क्वेश्चंस टिल 2021। अभी 2022 का तो अभी करना है। ठीक है। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ अनअकैडमी इन योर प्रिपरेशन? मॉक टेस्ट का कितना रोल था अनअकैडमी का? जैट मॉक टेस्ट, कैट मॉक टेस्ट, या तुमने कहीं और से कोई मॉक टेस्ट लगाया है? प्रैक्टिस क्या अनअकैडमी का जो प्रैक्टिस मटेरियल है वहां से किया है? तो Huh. इसका मेरे को बताओ एक बार। So Unacademy's greatest contribution is been through the classes. ओके, So classes I've only attended Unacademy. No other institution I've enrolled for classes. So whatever uh, I've learned has been through Unacademy. And sectionals have also I've took quite a few sectionals from Unacademy for quants and ओके, LRDI, and few mocks from Unacademy, but most then the rest were from time. ओके। सो you were enrolled in time test series, Just for the mocks. both cat and z? Huh, Okay. that and that. So, matlab, there, can you please give some success mantras to your juniors who are targeting ZAT 2023, 2024? So I'd say for like in both CAT and that main thing is consistency. That's something I've learned throughout the time. Yeah. Even if you are a fresher or or you are working, when you're working, you come back and like I'm too tired. Today I'm not going to do anything. Then that builds up over days. It might be a week, and I've noticed that if you don't do it for a few days, next time you start solving, you're kind of blank. So it's consistency that's key. If you're consistent, you'll do well. Second thing is we tend to put too much pressure on ourselves that I have to do it. What will people think? What will my parents think? What will my Mm. friends think if I don't get in? So like for me, because I put so much pressure on myself, I went off social media for about 6 months. I wasn't on Instagram or मैं अपनी on क्लासेस any में ही of the बोलता हूँ social ये media. बात तो, कि भाग जाओ यहाँ से, इंस्टाग्राम से सिलेक्शन नहीं होगा, फेसबुक से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। So then I didn't really talk to anyone for those past 6 months on Instagram. And the day I converted XLRI, I joined Instagram again. But till then, I was like, no Instagram till I can convert a call. इवन मतलब मैंने तो व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि मेरे टाइम पे, अब तो व्हाट्सअप चलाना मजबूरी है, ठीक है, उस टाइम पे मतलब Hmm. व्हाट्सअप लैपटॉप से चलाता था, क्योंकि लैपटॉप को आप कैरी नहीं कर सकते हो। फोन में तो हर Yeah. बार व्हाट्सअप खोल लेते हो, तो डिस्ट्रैक्शन होता था मेरे को। या मतलब ये तो है, कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने आज पढ़ा, अब 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ डेली जाना चाहिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए। एंड ठीक है, मतलब इज देयर एनी सजेशन? And then one more thing is not just my XLR interviews. If you look at my IM interviews, I've had a lot of questions from current affairs. Like we had a discussion on Elon Musk and Twitter. ओके। There's some protests in France, and all. So you can't just keep focusing on your studies. You never know what question will come at what point. I had questions on toolkits on Twitter. We had a lot of discussion on Twitter in 2, 3 interviews. I think in IM interviews, they all asked me about Elon Musk and Twitter. What's your opinion? So keep reading, and it doesn't matter. Read anything that you get. Don't just be like I'll only read newspapers. I'll only read editorials. Anything that you get, even if it's a book, it's a small article, read it because you never know what you read can help you.
And I felt that during my interview, something I might have read 5 years ago helped me with some statistic, with something in the interview. ओके That's another thing. ओके सो आई थिंक एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेते हैं। जेट में डीएम कैसे किया है तो ऑलरेडी कवर। इज इट ओके कि वी स्टार्ट एक्स्ट्रा सिलेबस ऑफ जेट ओनली आफ्टर गेटिंग? भी कवर कर लिया है नेटिव टू। या वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। या सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस करिश्मा, ठीक है। Thank you, sir. एंड इफ वी नीड मोर सच वीडियोस वी विल कांटेक्ट यू, ठीक है, फॉर योर Yes, sir. गाइडेंस। मतलब यार अपने जूनियर्स को गाइड कर देना जैट का, क्योंकि थोड़ा अलग रहता है कि मतलब तुमने 2 बार जैट का इंटरव्यू दिया है और फाइनली मतलब लास्ट ईयर तुम्हारा Yeah. फाइनल कन्वर्ट नहीं हो पाया। जमशेदपुर तो खुद ही ब्रांड Hmm. है यार, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं है ना मन में अभी, मतलब रहता है कि यार आईएम मिल जाता तो अच्छा होता है। अब जमशेद मतलब ये बैकअप तो हमने खुद डिसाइड किया था ना, तो हमें पता होना चाहिए Yeah. था इस बैकअप से, क्योंकि मैं तो खुद, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे और कोई बैकअप्स थे ही नहीं। मतलब बच्चों का स्नैप भी रहता है, फिर स्नैप नहीं Hmm. होता तो फिर वो सीमेट तक भी आ जाते हैं, ठीक है। बट ये बहुत अच्छा था कि यार या तो कैट या जेड, बात खत्म, अपने को और कोई इधर उधर नहीं जाना है। तो Yeah, जमशेदपुर तो because that was my aim, Blackie or XLRI. And one interesting thing is I grew up in Jharkhand. ओके First 9 years सो I was in Jharkhand. So it's like going back home for me. एवरीथिंग फाइन, ठीक, कोई इशू नहीं है, फिर तो बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू सो मच करिश्मा, ठीक है। सो Thank you, sir. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, ठीक है। Thank you. चले, ओके, थैंक यू, बाय। Bye.